रिगार्डिंग द करियर, राइट। पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। सेकंड, आर्ट ऑफ सीवी राइटिंग, एक जो इम्प्रेसिव रेज्यूमे है उसके क्या की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। थर्ड, आर्ट ऑफ गिविंग इंटरव्यू, राइट, व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ एन successful interview, typically what before interview, during interview, and after interview you have to take care. And the fourth part will be about the couple of careers things we have in the market. Acha, pattern here, 3 minutes I will speak overall, right, in continuous in one go. उसके बाद for the next 30 minutes we will be having an interactive session. आप उसमें questions में से पूछते जाएंगे chat box में, and I will keep giving the answers of those questions, right? In detail कुछ चाहिए होगा, मैं अपने जो email ID और different जो मेरा number वगैरह है वो भी chat में inshallah I will float it up for all of you. In future you can also contact me for any further specific feedback. Okay, quickly about the introduction. We regarding the organization which are working, and then we pursue further. I am working as a chief happiness officer. It's like a group chief HR, specifically of OGI and ODGE, both groups. We are around 30 plus organizations having 1,000 plus employee pool at this point in time. For this particular session, NetSkill is one of our tech education and training institute, which actually engaged me to be part of to lead this particular session. Thanks to NetSkill, guys. I have Sabrina. She is the CEO of NetSkill. Assalamualaikum, guys. How are you all? Hopefully they're gonna answer. So we're gonna take 30 minutes, right? Yeah. So hopefully all of you are fine. So okay. So we are in as an organization. We are in games and apps. We are in electric vehicles. We are in energy sector. We are in logistics. We are in e-commerce. And so forth, like we're in media, so on and so forth. So we are in all these particular dimensions. अच्छा, start करते हैं आज के टॉपिक से. Regarding the perception versus reality part, जो misconception का मैंने एक part, जब हम 4 साल की डिग्री में, we went through quite many different phases of grooming, right? अच्छा, उस grooming की phases में से देखें सबसे important factor क्या है कि हर कोई अपनी experience के accordingly perceive करता है और knowledge grasp करता है during the whole cover of 4 years, right? So during that time, you learn some realities, and then you also pick some perceptions which are actually not real, but you take them to certain perceptions, right? अच्छा, उन perceptions की हम बात करें जो actually as a misconception आपको they create those mental barriers जिनकी वजह से आप करियर में वो लीप नहीं ले सकते हैं right from start जो आप डिजर्व करते हैं. किस तरह की misconceptions है? Let's start with the very first and basic thing is the CGPA part, right? Generally we misperceive अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है, right, तो शायद आपको जीने का हक नहीं है. तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है. Typically in high-tech organization and good organizations जो purely intellect based hiring करते हैं लोग. So that's the first thing, the CGPA part. Second important part factor is your final year project. अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को इस एंगल से more than one का अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप आप लोग कर रहे हैं तो यू जनरली पिक पर्टिकुलर आइडिया जो 3-4 लोगों में डिस्कस होता है, किसी एक का फेवरेबल आइडिया होता है, इवेंचुअली उसी के ऊपर जाके वो उसको have to be like do the major part of the project, ठीक है, तो वो आप आइडिया पिक कर लेते हैं. अच्छा, लेट्स से आपने जावा में, डॉटनेट में, सी शार्प में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपने वो आइडिया पिक किया, ठीक है. अच्छा, उस पर्टिकुलर आइडिया में प्रोजेक्ट तो आपने पिक कर लिया. अब देखें फ्रॉम इनेट एबिलिटी स्टैंड पॉइंट, अगर आप 3 लोगों का ग्रुप है तो 3 लोगों की एक्चुअल एबिलिटीज विल बी डिफरेंट, राइट. अच्छा, वो डिफरेंट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को गेज करें, बजाय इसके आप उसको मिसपर्सीव ऐसे करते हैं कि अच्छा यार जावा में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है तो करियर तो मैं जावा में परस्यू करूंगा, राइट, मैंने तो जावा में मरना है, ठीक है. तो अब जो करंट सिचुएशन है टेक्नोलॉजी शिफ्ट की, जो करंट सिचुएशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उस केस में अगर आप देखें इफ यू ओनली वांट टू वर्क इन जावा, हमने आपको हायर किया, जावा में अपॉर्चुनिटी दे दी, अब वहां से जावा में काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी शिफ्ट आया और देन वी हैव एंड्रॉइड, राइट, which going to replace Java in the market to most of the context, typically mobile side पे.
तो आप तो कहते हैं जी मेरे तो जावा स्किल है, मैं तो जावा में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी के पास इसके बाद अगला पॉइंट जावा में नहीं है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट कंपनी सपोज्ड टू डू विद यू, राइट। तो इसमें जो मिसकॉन्सेप्शन वो ये है कि आपने कभी भी अपने आप को प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं बनाना। यू शुड बी अ गुड प्रोग्रामर or you should be a good intellectual problem solver, rather be a .NET developer or a Java developer or something else, right? So this is very important to understand from career progression standpoint or from misconception standpoint. अच्छा, मेंटल बैरियर का मैंने टिपिकली वर्ड यूज किया, इधर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप लोग इसको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए सर्कस सर्कस का आइडिया सबको पता होगा। सर्कस वाले कैसे टिपिकली करते क्या है, फॉर एग्जांपल एक उन्होंने बेबी एलिफेंट, राइट, और वो क्या करेंगे, उसे एक नॉर्मल से जो नॉर्मल सी एक रस्सी है उसके साथ वो बांध देते हैं आफ्टर प्रैक्टिस। वो बड़ी कोशिश करता है उसको तोड़वाने की, किसी तरह से उससे जान छुड़वाने की, मैं बांध दूंगी वो, एंड ही अनेबल टू डू इट, ही कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, राइट। कुछ दिन के बाद ही स्टार्ट रियलाइजिंग एंड एक्सेप्ट द फैक्ट यार वो ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अच्छा, with the passage of time he start growing and growing and growing and then he become a giant, right? But on the other side he keep maintain something in mind कि यार ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता, so he never try again after accepting the just reality यार मैं एक दफा भी ये नहीं कर पाया, मैं जब ट्राई किया now I am unable to do it forever, okay? तो इसलिए the power he hold, the quality he hold, वो उसको to the 100% extent he is unable to utilize. So that's the barrier actually which we need to break. आप लोग, मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा हमारे साथ के पूरे सेशन के बाद you guys will ask as many as questions you can ask. This is the right time for you to ask questions. आपने career choose करना है, you have to take a first leap in your career. अगर आज हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आज हम मिसकंसेप्शन के साथ जिंदा रहते हैं और इवेंचुअली, अच्छा ये इसी डिस्कशन में एक और जो पॉइंट मेरे जिम्मे आता है वो ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हैं, आप सीएस में आ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड, यू आर डूइंग सीएस फ्रॉम वेरी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हैं, तो देन यू कैन बी इन क्वालिटी एश्योरेंस और यू कैन बी इन बिजनेस एनालिसिस और यू कैन बी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, राइट। ऐसा अर्गेज नहीं है। So correct this thing in your mind very clearly. Even if you hire as a programmer from Microsoft, you still have to serve for the first 2 years as a software development test engineer 1, software development test engineer 2. वो पहले आपको टेस्टिंग में डालते हैं and they want to learn you from the quality standpoint कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड में कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। इसी तरह से as a matter of fact कि अगर आपको लूप होल्स का नहीं पता तो आप कंट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे। So common sense is that first you should be, if you are good in programming skill and if you are good in your raw problem solving skills, you can be equally considered in programming and in the quality assurance side as well, right? So don't worry about it. If you think that you have aptitude to be in programming, then the good news is still there are 10 other opportunities for you waiting to be part of those opportunities. मैं end पे उन opportunities का categorically जिक्र भी करूँगा। ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन थी, इसके अलावा आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आई विल कंट्रीब्यूट क्वेश्चन हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो सीवी राइटिंग है। देखिए सीवी राइटिंग में सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, आप 3 या 4 बच्चों का ग्रुप है ना, मैं अगर आपके करियर फेयर पे आया हूँ और मैंने आपसे सीवी कलेक्ट कर ली है विदाउट नोइंग कि किसका कौन सा सीवी किसका है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट केसेस में मैं सीवीज रिव्यू करते हुए आई कैन फाइंड आउट कि ये 4 बच्चे एक ग्रुप के हैं। यार ऑब्जेक्टिव तक चेंज करने का आप लोग जमा नहीं करते हो, खुदा का खौफ करो। इट्स यू जो अपना ऑब्जेक्टिव लिख रहा है, इट्स नॉट समवन एल्स जिसका ऑब्जेक्टिव आपने कॉपी करना है, राइट। सेम केस में प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट दें जो इंटीग्रल पार्ट्स है ना, 1 by 1 regarding the integral parts, let me give you a count 1 by 1. सबसे पहला फैक्टर है आपकी टेक्निकल समरी ऑफ योर करियर, राइट। अच्छा, टेक्निकल समरी का क्या मतलब है, देखिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं 1 पेज सीवी होना चाहिए फ्रेशर का, 2 पेज सीवी होना चाहिए, हाफ पेज सीवी होना चाहिए, 5 पेज, कितने पेज के सीवी इज अ गुड रेज्यूमे, राइट। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है, देखें सीवी 1 पेज का है, सीवी 5 पेज का है, सीवी 2 पेज का है। द
थिंग व्हाट मैटर इज द वैल्यू यू आर मेंशनिंग ऑन दैट रिज्यूमे, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का बड़ा सिंपल सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। अगेन ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी है, तो ये अब आप क्लियर कर लें। हमने एक आप में से एक टीम ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और लेट्स से आप आपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, राइट। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कितने लोग यूज करने जा रहे होंगे? गेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट्स है, ये 30,000 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल इन ओवरऑल ऑल द बैचेस, राइट। और लेट्स से वी आर लाइक 4,000 फैकल्टी मेंबर्स, राइट। So 24,000 people are going to use our FYP, जो कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, और उस पे आपने लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिख दिया, आप गाते जो है वो गाल दी इस काम में, या यू डिड अ सुपर जीनियस स्टफ। ऑन अदर साइड, राइट, व्हाट्सएप का आप लोगों को पता है, गूगल टॉक, जी टॉक का भी आप लोगों को पता होगा। लेट्स से आपने 4 लाइन ऑफ कोड, यू एनी वन ऑफ यू रोट 4 लाइन ऑफ कोड फॉर व्हाट्सएप, राइट। कितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? मिलियन, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ थ्रेड्स आर बीइंग यूज्ड इन व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर नजर आ रहा है कि एक तरफ आपने जो 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, उसका इम्पैक्ट है 24,000 पीपल के लाइफ पे, वो जो कि उसको यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने 4 लाइनों का कोड लिखा है, राइट, और द इम्पैक्ट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन इज फॉर like billion of people's life, right? That's what I particularly call value. That's what any institution in the world called value in whatever you are doing. तो हम एक रेज़्यूमे पे ना वैल्यू ढूंढते हैं। अच्छा, अगेन देयर इज अनदर मिसकॉन्सेप्शन कि फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपीरियंस का पूछा जाता है कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो फिर हम आपको हायर करेंगे। कॉमन सेंस है, जो दुनिया का पहला फ्रेश ग्रेजुएट होगा भाई, उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो देयर हाउ ही स्टार्ट द करियर आइडियली। तो we never ask for the experience. What we ask for is कि जो आपकी सीवी पे लिखा हुआ है, जो भी आपने 4 साल में काम किया है, उसकी वैल्यू एडिशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क यू डन, ठीक है। तो दैट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस स्पेस से ऑलरेडी गुजरे हैं, जो ऑलरेडी डन विद योर एफएपीज, फेयर इनफ। जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, आप ये मैसेज उनको जरूर दें। फ्रॉम द वैल्यू स्टैंड पॉइंट दे विल बी वेरी वेरी कीन इन डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू। अच्छा, सीवी राइटिंग में सबसे पहला पार्ट जो है वो है टेक्निकल समरी। टेक्निकल समरी में आप जनरली क्या लिखते हैं? नॉट मोर देन 3-4 बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहले आपकी डिग्री, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, अगर आपका, अब क्योंकि ये जनरली बच्चे ऐसे करते हैं तो मैं बोल भी देता हूँ कि अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आपकी वो पहली लाइन वो मैसेज भी होना चाहिए। अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग सीजीपीए डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज द वैल्यू यू आर मैचिंग ऑन योर रेज्यूमे। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें एक डेवलपर हायर कर रहे हैं, वी नीड टू हायर प्रोग्रामर, ठीक है। और एक तरफ 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए वाला कैंडिडेट है, राइट, आप लोगों में से, और दूसरी तरफ वी हैव अ कैंडिडेट जिसका सीजीपीए 2.5 से कम है, लेकिन वो 6 टॉप प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस का विनर है। आई कैन लाइक रैंडमली टेक नेम ऑफ दोस कॉम्पिटिशंस एज वेल। सॉफ्टटेक है, IEEE कोडिंग गुरु लम्स करवाता है, नेस्टेक है, सॉफ्टकॉम है, नेस्कॉम है, प्रोकॉम है, फास्ट कैची करवाता है। फॉर एग्जांपल, ये 5-6 कॉम्पिटिशन किसी ने विन किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने एक टॉप का प्रोग्रामर हायर करना है, should I be seeing 4 out of 4 CGPA as a good organization, or a guy who is already as a programmer who is already a cream out of the creams, right? तो कॉमन सेंस ये कहती है कि मुझे जिसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ एक फोरम पे, आई शुड बी सेलेक्टिंग दैट गाय। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी सीजीपीए के ऊपर डिसाइड नहीं कर लेती हैं कि हमने किनको बुलाना है और किनको नहीं बुलाना। सो रिमेंबर दिस पॉइंट इन माइंड। अच्छा, सर टेक्निकल समरी में first line could be your degree and CGPA. Second, if you have any of the achievements, for example, after 6th, 5th, 4th semester में you get you are in the lean list, for example, आप वो लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको रिकग्निशन मिली है, कोई फंडिंग आपने सिक्योर की अपने ड्यूरिंग सेमेस्टर प्रोजेक्ट, किसी फोरम पे आपने प्रेजेंट किया, डू मेंशन दैट एज वेल। और उसके बाद आपकी जो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी बड़ा मैटर करती है अगर आपने वैल्यू काम किया, राइट। So anything creative you did, so do mention in those 3 or 4 lines as well, ठीक है। ये 3 से 4 पेज जो लाइन की चीजें हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपका सीवी लेट से 1 से ज्यादा सफे का है, ठीक है। जरा आप सोचे पॉइंट, एक एज एन इवेल्युएटर,
मुझे क्या चीज कन्विंस करेगी आपके पहले पेज पे कि मैं आपके सीवी का दूसरा पेज पढ़ लूँ? देखिए एज ए रियलिटी, अगर 20 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और मेरे पास 4 से 100 रेज्यूमेज आ रहे हैं, ठीक है, व्हाई शुड आई स्पेंड माय टाइम ऑन योर रेज्यूमे? लेट्स सी मैंने आपका रेज्यूमे पिक कर लिया है, व्हाट गोना कन्विंस मी ऑन योर फर्स्ट पेज कि मैं आपके सीवी का दूसरा पेज देखूं? ठीक है, दैट्स ऐसे आपको सोचना चाहिए ना, दैट्स सो यू प्रिटेंड लाइक एन इवैल्यूएटर एंड देन सी कि व्हाट, वो जो समरी सेक्शन है ना, इफ यू आर मेंशनिंग समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वैल्यूएबल एंड दैट इज ऑन योर सेकंड पेज, तो मैं ना चाहते भी आपकी पेज पे जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले 10 सेकंड में पहला सेक्शन तो पढ़ूंगा ना, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसलिए समरी सेक्शन शुड बी हैविंग द क्रक्स ऑफ योर रेज्यूमे, ठीक है? एक आर्टिकल था, आप लोग उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा कि हाउ टू राइट योर रेज्यूमे इन वन ट्वीट। 64 वर्ड से होते हैं, 164 वर्ड होते हैं एक ट्वीट में, तो आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो यू हैव अ गुड आइडिया कि कम से कम वर्ड्स में कम से कम डाटा यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगला पार्ट है टेक्निकल समरी के बाद, जो वो आपका जनरली, बिकॉज यू आर साइड, तो आपकी डिग्री की कोई, अगर आप कहाँ से पब्लिक डिग्री कर रहे हैं और आपकी कोई अगर उसमें रिकग्निशन है, फॉर एग्जांपल आपका कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप था एफएससी में फॉर एग्जांपल, या इंजीनियरिंग वगैरह में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप डीन लिस्ट में रहे हैं, या यू डन इन कपल ऑफ सेमेस्टर यू डन वेल, तो आप अपना टोटल सीजी में लिखिए और फिर जरूर मेंशन करें कि आप इस सेमेस्टर टिपिकल में आप डीन लिस्ट में रहे, जस्ट एज एन स्टैंडर्ड स्टूडेंट लाइक एजुकेशन। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रोजेक्ट पार्ट। आप अक्सर सीरीज मैंने देखे हैं, प्रोजेक्ट लिखा है, नीचे नाम लिखे हुए 4 एंड दैट्स इट। अब मैं एक आपके पूरे ग्रुप की सीवी, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 3 से 4 लोगों का ग्रुप होता है, कोडिंग बेचारा एक ही कर रहा होता है या बेचारी एक ही कर रही होती है, ठीक है? Whoever is gonna be that is the one key like Shahrukh Khan of the team, right? अच्छा, अब बाकी एक दो जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, कोई एक आध होता है जो बेचारा चाय समोसे लाने वाला होता है, तो that's the actual division of any team you gonna pick, at least in my 15 years of career, मैंने फर्स्ट क्लास की लीवर ऐसी देखी है जहाँ पे ग्रुप में प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसीडर करने वाला वो ये है, देखें अल्लाह ने हमें यूनिक बनाया है, ठीक है, हमारी यूनिक एबिलिटीज भी रखी हैं, आप नो डाउट एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं, खुदा इसको ऐसे ना समझें कि वही पर्टिकुलर एरिया आपका करियर बन गया है, ठीक है? ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ी, लोग अपना करियर र्यून करते हैं, इनिशियल इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर करियर, ठीक है? तो मैं अब सीरीज पिक करता हूँ, मेरे पास सीरीज आती है, मैं देखता हूँ 4 सीरीज है, चारों पे प्रोजेक्ट नेम लिखे हुआ सेम, हो सकता है चारों चारों साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट में सेम ग्रुप में रहे हो, मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूँ कि आप में से कोडर अच्छा कौन है, क्यूए में कौन जाना? हो सकता है कोडिंग की बहुत अच्छे कोडर है आप, लेकिन मेरे पास डेवलपर की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास क्यूए की अपॉर्चुनिटी है, व्हाई शुड आई कंसीडर यू? इसमें इशू पता क्या आता है, आप लोग अपने आप को खुद धोखा देते हैं, आप सोचते हैं यार मैंने 20 कंपनियों में अप्लाई किया है, मुझे किसी कंपनी की तरफ से कॉल ही नहीं आई है, पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, अब्बा जान प्लॉट बेचे, मैंने बाहर जाना है ठीक है? तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज बी वेरी रियलिस्टिक विद योर ओन सेल्फ, ठीक है? आप पूरे फोकसली सी इट आउट कि सबसे पहले ड्राफ्ट आपका स्किल क्या है, बेस्ड अपॉन योर स्किल फाइंड आउट द रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी। अभी उसमें मैं आऊंगा, जब मैं ये जॉब इंटरव्यूज पे आऊंगा तो मैं उसमें तो प्रोजेक्ट में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, आप जब अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो काम के हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 चीजें लाजमी है, ये आप नोट डाउन भी कर लें। सबसे पहला फैक्टर है उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट यू आर नेमिंग अप, 2 लाइनर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्नेक गेम में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? स्नेक गेम आप बना रहे हैं तो आप उसका एक इंट्रोडक्शन 2 लाइनर लिखेंगे, उसके बाद उसमें आप टेक स्टैक किस टेक स्टैक में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपको टेक स्टैक explicitly write those tools and technologies, if it's React, if it's Node, if it's only front end, if it's Java and any other technology stack, आप बैकएंड पे जो भी उसके Laravel यूज करें, जो भी यूज करें, आप PHP Laravel कर रहे हैं, आप डॉटेड के साथ कॉम्बो में करना चाह रहे हैं, Python एंड डॉटेड, इट्स मेंशन दैट टेक स्टैक, ताकि हमें समझ तो आए कि ये वो टेक स्टैक है जिसके लिए वी कैन कंसीडर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, राइट? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज
your role in that particular project. Okay, let me repeat twice. You should mention your role in a particular project. Out of 4 people, what you exactly did in that project, do mention in your CV. This is very, very important to increase your chance of opportunities in that particular organization. ठीक है? अच्छा, प्रोजेक्ट के बाद अगला जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है वो होता है जनरली वो होता है अचीवमेंट्स का. ठीक है, कि अगर आपकी वो ड्यूरिंग द 4 ईयर आपकी वो अचीवमेंट्स है जिसमें आप लिखना चाहते हैं दो वर्दी अचीवमेंट्स. डीन लिस्ट कुड बी वन ऑफ द पार्ट. अगर आप टॉपर हैं, आप मेंशन दैट. आपने किसी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन को विन किया, इवन पार्टिसिपेट किया, डू मेंशन दैट, राइट. आपने किसी को किसी नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किया, डू मेंशन दैट. आपने कोई सोशल वर्क किया है इवन फॉर योर नेटिव सिटी, even for your any particular team or even for your sect, right? वो आप जरूर लिखें. Honestly speaking, this thing pays you really well when you actually mention those things on your resume. ठीक है, तो ये अचीवमेंट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक पॉइंट जो आप लोगों ने इस पूरे रेज्यूमे को बनाते हुए कंसीडर करना है वो है ऑनेस्टी. Positivity and honesty. You can take it as 2 points. Never claim what you cannot defend. ये रूल आप जेब में बैठा लें. आपने रेज्यूमे पे ऐसा कुछ नहीं लिखना कि यार उसने लिखा है तो चलो मैं भी लिख दूं तो क्या हर्ज है. ठीक है, अदरवाइज दिस गिव अ वेरी 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 बैड इम्पैक्ट. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कई लोगों का करियर र्यून होते देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंशनिंग वन सच रॉन्ग थिंग. एक नेटवर्क इंजीनियर हम इंटरव्यू कर रहे थे, इट वाज लाइक 7 years of experience और वी सपोज्ड टू डिप्लॉय हिम टू जापान अमंग रेस्ट ऑफ आवर टीम. तो हमने कोई 120 लोगों में से एक बंदा शॉर्टलिस्ट किया. फाइनल इंटरव्यू है सीटीओ के साथ. And then the CTO was asking, when you configure and implement that particular tool, that particular API, right? तो उसका जवाब ये था, सर एक्चुअली ना I never implement that particular API. उसने कहा, why you mention on resume? उसने कहा, सर बात ये है कि इतने सारे कीवर्ड्स थे, मैंने मोस्टली में तो काम किया हुआ था, तो मैंने सोचा यार इसको भी कॉपी करके लिखते थे, क्या हर्ज है, वो इतने सारे में से कोई पढ़ेगा थोड़ी. बाय चांस उसकी बैड लक थी. वन डिस्कस्ड, उसने कहा जी मैंने काम नहीं किया हुआ. He's mentioned out of 7 different interviews. On the 8th interview, he got rejected. He was blacklisted. Okay, so make sure never mention what you can't defend, right? अच्छा, quickly we come to the art of interview वाला part. अब इसमें मैं CV राइटिंग में मैंने ये सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं. इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा वो आप मेंशन. अच्छा, हॉबीज एक पार्ट होता है, जनरली वो आप लिखे ना लिखे doesn't have a very strong impact as long as you have some exceptional hobby or you achieve something in that. लेकिन अगेन डोंट एग्जैजरेट. ठीक है, अचीवमेंट्स में मैं एक फनी थिंग आपसे शेयर करना चाहूंगा. एक बड़ा फैक्ट है, देखिए आप ग्रेजुएट हो रहे हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं. मेरे पास एक सीवी आया और उस सीवी पे एक अचीवमेंट लिखी हुई थी और वो अचीवमेंट थी आई स्टूड फर्स्ट इन माय सेकंड क्लास. तो खुदा का नाम है, आप देखें द कैलिबर एंड द वैल्यू फॉर व्हिच यू आर गोइंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, राइट. And then you have to mention the suitable achievements under that achievement section. ठीक है, तो ये please avoid anything like childish like this. Okay, so अब हम आते हैं quickly about art of interview. Interview is giving an interview is preparing for that is actually an art. ठीक है, उसकी जो preliminary success है ना आपकी, वो इंटरव्यू के टाइम या इंटरव्यू के दिन से शुरू नहीं होती है, वो उस वक्त शुरू होती है जब आपने सीवी भेजना है. ठीक है, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक दैट कि क्या प्रिलिमिनरी है. सबसे पहली बेसिक प्रिलिमिनरी पार्ट ये है कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप तक आ रही है, ठीक है, उस जॉब, देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को, उस प्रॉब्लम क्योंकि वो रेकरिंग आ रहा होता है, तो रेकरिंग सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक सेट ऑफ स्टेप्स लेता है. वो जो सेट ऑफ स्टेप्स है ना वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है. ठीक है, अब आपकी सुटेबिलिटी देखी जा रही है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से. तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि बहुत से हम में से लोग हैं माशाल्लाह, बहुत से बिजी होते हैं व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वो जेडी पूरी पढ़ा करें, राइट. अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ डिलेमा. मुझे 80% रेज्यूमेस जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के आते हैं वो सीनियर पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन पे आ रहे होते हैं. ठीक है भाई, कम से कम आप जहमत तो करें कि ये पढ़ने की कि इसमें सूटेबिलिटी है आपकी. क्या इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेशर आर आल्सो कंसीडर्ड? क्या इसमें कहीं ये मेंशन है कि जो टेक्स्ट स्टैक उसमें लिखा हुआ है आप उसको जस्टिफाई करते हैं? ठीक है, तो
अगर ये चीजें आप पे मैप नहीं होती है, सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट make yourself fool just by randomly sending CVs to 10, 15, 20 different companies and then saying मैंने अम्मा जान अब्बा जान इतनी जगहों में अप्लाई किया और eventually I didn't get a call. आपको कॉल आनी भी चाहिए in this scenario, right? तो be very realistic and to the point. And अच्छा, इधर सबसे important point है वो है attention to detail का. Unfortunately हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और कुछ जनरल हमारी सोशल नॉर्म्स में भी ये प्रॉब्लम है. हम वो समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं, हम वो नहीं समझते जो अगला कह रहा होता है. ठीक है, so you have to make yourself correct in that context कि attention to detail आपका कितना strong है in context of understanding that particular job description and then your homework. अच्छा, सबसे पहली चीज आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड किया, आपने अपना सीवी भेजना है. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका जो ईमेल आईडी जिससे मुझे सीवी आ रहा है उसमें आपके नाम के अलावा दुनिया की कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट एंड सेकंड नेम, देयर इज नथिंग. Third thing I am expecting out in your in that email ID. Can you believe कि आप प्रोफेशनल करियर के लिए और जॉब के स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप आपने लेना है और आप रेज्यूमे भेज रहे हैं और आपका ईमेल आईडी है hot_molvi@gmail.com. Can you expect the professionalism like this? So never expect कि मैं आपका वो ईमेल में CV ओपन भी करूँ, right? That's the time from where your professionalism starts, right? अच्छा, प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो गया, आपने सीवी भेज दिया. सब्जेक्ट ऑफ योर ईमेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसिडरेशन ऑफ योर रेज्यूमे. सब्जेक्ट आपका इतना है क्या चीज होना चाहिए ईमेल का कि मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ टू ओपन योर ईमेल एंड देन योर रेज्यूमे. अच्छा, बिफोर इंटरव्यू दो तीन चीजें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है होमवर्क. अगर आपने स्ट्रॉन्ग होमवर्क नहीं किया हुआ अबाउट द कंपनी, अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स of that organization, about the role you're going to take up over there, so high chances that you will not lead that as a standard candidate for that position. ठीक है, homework is very important. अच्छा, during interview what is important? During interview में सबसे पहली चीज है positivity, right? गिलास बड़ी फेमस एग्जांपल है, गिलास आधा भरा हुआ और आधा खाली है. You always have to speak about जो आधा गिलास भरा हुआ है. ठीक है, जो लोग टॉप करते हैं ना, जनरल साइकोलॉजी है, वो बात ऐसे करते हैं हमें इतने ज्यादा नंबरों से हमने टॉप किया है, रेफरेंस इतने ज्यादा नंबरों का. जो फेल हो जाते हैं ना वो ये कहते हैं यार इतने से नंबरों से हम रह गए हैं, राइट? तो यू हैव टू टॉक ऑलवेज अबाउट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इन एन इंटरव्यू, राइट? अच्छा, सेकंड, टू द पॉइंट. don't back things. You don't have to drag particular answers. अच्छा, क्वेश्चन एंड आंसर. अगर आपको इंग्लिश सुनने और बोलने में मसला है तो ये प्रॉब्लम नहीं है. जितना बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप गलत आंसर दें. आप 10 दफा क्वेश्चन पूछें, 10 दफा होने के सर आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज कम अगेन, कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज नरेट इट अप, कैन यू प्लीज राइट इट अप इवन, राइट? यू कैन आस्क. लेकिन आंसर आपने एक दफा देना, रिमेंबर दैट. तो आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज व्हाइल गिविंग आंसर सिंपली आस्किंग एक वो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू अक्सर आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनी क्वेश्चन फॉर अस, राइट? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, दैट इज द वन ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चन विच डिसाइड योर सिलेक्शन रिजेक्शन. देखें, सीरियसनेस एक ऐसा फैक्टर है, अगर आप सीरियस नहीं है ना तो आप कहीं भी कामयाब नहीं होंगे. आपने अपने FIP सेलेक्ट किया, ठीक है, किसी भी डोमेन में सिलेक्ट किया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस पर्टिकुलर एरिया की 5 डिफरेंट कंपनी मुझे बताएं. अगर आपको वो नाम पता है ना while selecting your topic, तो looks like you are somehow you are a bit serious about your career. ठीक है, आपको पता है जो मैं कर रहा हूँ इसके बाद मैंने अप्लाई कहाँ करना है. ठीक है, सेम केस में अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं की, प्रिपेयर तब करेंगे जब आपने होमवर्क किया होगा. जब आपने होमवर्क किया होगा यू नेचुरली हैव कपल ऑफ क्वेश्चन. किस एरिया में क्वेश्चन होने चाहिए? करियर ग्रोथ, कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ. अच्छा, व्हाई यू थिंक आई एम द मोस्ट राइटेस्ट कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? What will be the career growth if I join your organization? You can ask in what question? Why should I stay for 5 years in your company? ठीक है, ये अक्सर आपने इससे क्वेश्चन नहीं सुना होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन एक मैसेज देते हैं कि ये बंदा या इंडिविजुअल या कैंडिडेट इतना प्रिपेयर होके आया है about us, या he is or she is a bit more serious in comparison to rest of the people. ठीक है, और उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको अपने एक्स फैक्टर पता होना चाहिए.
जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे कम्युनिकेशन यूज करते हुए अपनी स्किल मैंने कैसे उनको अपना आप जो है वो स्टैंड आउट करना है, हाउ आई शुड प्रेजेंट देम माय सेल्फ एज एन ऑड वन आउट, राइट, इन द पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बड़ी बात है। इंटरव्यू के बाद क्या आपको करना चाहिए? वेरी सिंपल थिंग इज बी एंगेज्ड विद देम एंड कीप आस्किंग देम अबाउट कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक, कि क्या अपडेट है, मुझे अब आप क्या जरूर बताइएगा, मुझे ये जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपका की पोजीशन करंटली ओपन है या क्लोज हो चुकी है, व्हाटएवर, बी कनेक्ट विद देम, राइट। अच्छा, एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, खुदारा अगर आप ऑब्वियसली 10-15 डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यू देंगे, अगर किसी एक जगह पे आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बाकी कंपनीज को खुद बताएं कि यार आई ऑलरेडी एक्सेप्ट पर्टिकुलर ऑफर, मैं आपके पास कंसिडरेशन में अगर हूं, तो अब आप मुझे आप फर्दर लिस्ट में ना रखें, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से अगर एक जगह आपने साइन कर दिया है, एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो देखें, डोंट गो फॉर इंटरव्यू एनी अदर प्लेस, ठीक है। हमारा ऑफिस अल्फा टावर में है, इट हैपेंस विद मी कि मेरे पास 6th फ्लोर पे एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, जॉब ऑफर लेटर साइन किया, अगले 5 मिनट में वो 7th फ्लोर के ऊपर इंटरव्यू देने बैठा हुआ था। With which confidence भाई, तुमने तो you commit something, right? Integrity is one of your strengths, उसको आपको होल्ड करना। कुछ यूनिक फील्ड्स मैं क्विकली, मुझे इस पे आना पड़ रहा था, इसके भी कपल ऑफ अदर थिंग्स, कुछ यूनिक फील्ड जो अच्छा हम जनरली क्या सुनते हैं, डेवलपर अच्छे है कोडिंग में तो आप डेवलपर है, कोडिंग में अगर अच्छे नहीं है तो आप क्यों है, 5-7 साल के बाद आप यू विल बी ऑन अ प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर, जनरली हम ये सुनने में मिलते हैं। However, in the market, what you can listen is data analyst, game analyst, system analyst, business analyst, tech pre-sales engineers, social media marketing engineers. ये मैं उन लोगों की बात करूँ जिनका CS का बैकग्राउंड है, ये highly they are required in those different areas as well. Technical content writing with a CS background बहुत रेयर है मार्केट में, we do need. अच्छा, इसी तरह से आप आईटी की तरफ आ जाए तो DevOps is one of the area, DevSecOps सिक्योरिटी की डोमेन एक अभी अनटैप्ड है बहुत ज़्यादा, DevSecOps is a very very vibrant area जो मार्केट में इन हो रहा है, तो उसमें आप अपने देख सकते हैं, रोल देख सकते हैं। इसी तरह से क्लाउड, जो गूगल क्लाउड है, जो अजूर है, AWS क्लाउड है, अमेजोन का जो 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 उसके ऊपर you can have multiple certifications and get in for that as well. Tech recruiter, can you believe top 20 technical skills में Python, Java, Android, .NET, ऐसे top 20 skills में technical recruitment is at number 3. Can you believe? Generally हमारी misconception क्या है? Recruitment is for the HR people, right? So technical recruitment could be another area जहाँ हम जा सकते हैं. Again, I am a CS graduate and I am in HR like since last around 30 plus years, and because technical मैंने adaptive skill क्या थी? CS, which I learned by book. People when I work with them, with guys, they groom me to work in what which is got to me, and that is people management. So I am working 13 years what I've been actually made for, right? So that's how you know yourself. That's how you get in with the good CV. That's how you go to the interview, and I shared the multiple job opportunity as quickly as I can. So I am done like with my part, right? You guys can start writing your question in the chat box and let me like answer them. Session is recorded and it is on Nextskill page. Nextskill Facebook page. You can see, you can watch this session again on Nextskill page. You can share the link to the Facebook page. Mrs. Suhaib Kamran, thank you very much for your appreciated comments. I would like, I don't know you being part of students of faculty, but I would like that now let's come up with questions, right? And ask anything you have in your mind. Even if you're part of faculty, I would like that you will just come up with whatever you have in your mind. And let me comment on that. Okay, so Mr. Muhammad Ahmed, tips for beginners for improving their coding skill.
यार कोडिंग इज वन ऑफ दैट इन वन ऑफ दैट कैटेगरी कि इसको इम्प्रूव करने का एक तरीका है कोडिंग करें. That's the only way out. Man, I was part of a team with the name of Shaheens in 2006-7, and we were the winner of 6 major programming competitions throughout Pakistan, right? And the only thing, how we've been groomed to that level, हमने पिछले उससे पहले वाले 3-3.5 साल हमने सिर्फ कोडिंग की without like actually forgetting about what payback we're gonna get from the market, right? And eventually we get it. Right. So, Sir Harun, thank you so much for having this session. This is Sarah. So thank you once again for having this session with our students. So I can read those questions to you and you may answer them appropriately. So one student is asking any books to read for improving problem solving skills or data analysis skills. अच्छा मेरा ओके सो इसमें मैं आपको क्विकली बताऊं. आप ना अगेन हमारा माइंडसेट है बुक्स में घुसने का, ठीक है? तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट. बड़ा आप लोगों ने बड़ी बुक्स पढ़ ली है, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लर्निंग स्टैंड पॉइंट से, तो और उसका आंसर भी मैं खुद ही दे दूंगा क्योंकि आई डोंट नो व्हाट कि इतने सारी ऑडियंस में से माशाल्लाह वी स्टार्ट गेटिंग लाइक जंबल ऑफ विद आंसर्स. मैं अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द बेसिक एब्सोल्यूट डिफरेंस इन वॉक एंड रन, राइट? कि चलने में और दौड़ने में व्हाट इज एब्सोल्यूट साइंटिफिक डिफरेंस, राइट? आपको इसका आंसर देने के लिए यू डोंट नीड एनी बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है? मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगा. आई एम डैम श्योर 99.9999% पीपल नेवर थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है? अक्सर लोग कहते हैं ये दोनों सेम चीजें हैं. अगर सेम है तो ये दो अलग क्यों है? बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, ठीक है? फ्रॉम कॉमर्स स्टैंड पॉइंट. अच्छा, आप एक क्लू ये है कि एक वॉक रेस इज अ कैटेगरी इन ओलंपिक्स एज वेल, राइट? आप उसको अगर देखें, आप उसको रूल्स को देखें तो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग मिल सके. क्विक आंसर ये है, जब आप चलते हैं, अच्छा कई लोग कहेंगे जी जो आपकी जो टाइम है टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज अ डिफरेंस. टाइम, स्पीड, जेस्चर, पोस्चर्स, ये सब डिफरेंसेस हैं, राइट? ये सब डिफरेंसेस हैं, लेकिन दो टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है? एक बच्चा अगर भाग रहा है, मैं चल रहा हूँ, तो मैं फिर भी उससे पहले पहुंच जाऊंगा, राइट, टू द डेस्टिनेशन. तो ये सब चीजें रिलेटिव होगी. एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट साइंटिफिक डिफरेंस. देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस ये है, जब आप चलते हैं तो पहले आपकी एड़ी टच करती है जमीन को, फिर पंजा, राइट? जब आप भागते हैं तो पहले पंजा टच करता है, फिर एड़ी, राइट? द रियल क्वेश्चन इज, ये डिफरेंस आप में से मेरे पूछने से पहले हाउ मेनी पीपल एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट, थिंक लाइक दैट? हम ये फर्क, हम ऑल ऑफ अस आर लाइक वी आर यूज्ड टू वॉक एंड रन एज वेल, राइट? हम में से कितने लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से इस डिफरेंस को पहले कभी फील किया? अगर नहीं किया ना, तो ये एक बड़ा सिंपल सा, ये मैं असल में किसके आंसर में मैं ये एग्जांपल दिया है जिन्होंने वैसे बुक के बारे में बात की. देखिए अब आप बुक से बात कमिंग टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है? आपने बुक से नहीं सीखा कि आपने शूज पहले पहनना है या सॉक्स पहले पहननी है, राइट? राइट, वी लर्न फ्रॉम सराउंडिंग्स, वी लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, वी लर्न व्हाट एग्जिस्ट्स इन आवर ओन सराउंडिंग्स. कुरान में भी ये बात बड़ी क्लियरली आई है कि हमने गौर फिक्र करने वालों और सोचने वालों के लिए उनके इर्द गिर्द निशानियां रखी है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर बुक्स टू जस्ट लाइक वन थ्रू, एक्सप्लोर, पुट योरसेल्फ इन सिनेरियोज. अल्लाह ने हमें मैं कई सेशंस में मजबूर हो जाता हूँ ये कहते हुए कि यार अभी हम लोगों के ना दिमाग के टैग ही नहीं उतरे हुए, हम इतना नया हमने दिमाग रखा हुआ है. यार you have to think about the problems in reality, right? एक गोरा जो है वो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकता है एक शीशे के सामने खड़े होकर और ये देखते हुए कि शीशे के दूसरे तरफ जो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, वो भी वही प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो भी वैसे बिहेव कर रहा है, सिर्फ फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट? तो यार हम भी तो शीशे के सामने खड़े होते हैं भाई. व्हाई नॉट वी क्रिएट इट एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो चेंज योर द प्रॉब्लम्स. देखें सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? इससे पहले भी सेब नीचे गिरता था, but he was the guy who think about the problem from a different perspective. तो ये सारी गेम पर्सपेक्टिव की है, ठीक है? तो आपने एक्सेल करना है अपने आप को इन डिफरेंट प्रॉब्लम. अगर अच्छा
आप थ्योरेटिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अगर जाना चाहते हैं जस्ट टू पॉलिश योर स्किल, तो मैं कहूँगा गूगल इज द रियल टीचर फॉर दैट, राइट? गो ऑन गूगल, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। अच्छा, एनालिटिकल स्किल्स हर पर्टिकुलर फील्ड में है, ठीक है? आपने कहानी को ट्विस्ट करना है, वो चीज जो जो एक सिंपल प्रॉब्लम था वो ट्रिकी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है आई कांट सजेस्ट यू एनी पर्टिकुलर बुक। मैंने बुक से नहीं सीखा कि आपने लाइफ में आने वाली अनफोर्सीन सिचुएशंस को स्मार्टली एड्रेस कैसे करना है। मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके ये चीजें सीखी और ये आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए गूगल इज प्लेस। So students are also inquiring about internships, how strongly they're gonna impact their resume. So they wanted to know if there is any edge if they have done internships before and then going to apply for any job. जी मैं बिल्कुल इस पे आई वांट टू ऐड अप क्विकली कि यस उसके लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि यार डू समथिंग वैल्यूएबल इन योर इंटर्नशिप। वो चाहे आपका 2 दिन वैल्यूएबल है ना, वो आपके करियर पे इम्पैक्ट रखेंगे। देखिए होता क्या है, 3 महीने की हम इंटर्नशिप करते हैं, 3 महीने इंटर्नशिप में 20 to 22 तो आपके ऑफ डेज होंगे, तो 1 महीना तो वर्किंग आपका वैसे गया। 2 महीने में से आपने उस सेमेस्टर में जनरली 8 सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपने यूनिवर्सिटीज में भी FYP के फॉलोअप के लिए जाना है, कोई कहीं पेपर्स आ जाएंगे, 5-7 दिन अगर वो निकालते हैं, टोटल 1.5 महीना होता है वो इंटर्नशिप के लिए। अब अगर आप वो 1.5 महीना भी ऑनेस्टली नहीं लगाते ना, और आप अपने लिए कुछ, हमें वी डोंट वांट अ पे बैक फ्रॉम यू इन इनिशियल पीरियड, व्हाट वी वांट कि यार आप ही कुछ हमसे कैरी कर लो, लर्न समथिंग फ्रॉम अस, राइट? जो अच्छी कंपनीज है वो सोच समझ के इंटर्न्स हायर करती है और फिर वो वैल्यू ऐड करती है। तो यस दे डू इम्पैक्ट एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड वैल्यूएबल इंटर्नशिप। Yeah, I very much second Mr. Haroon's wording on it, because if you want to impact your CV, or if you want to impact your career afterwards, you have to have a relevance in your internship. And internship is a meaning that if you have studied something, you could able to translate that into a practical working. So that is very much true. The next question from to Mr. Haroon Akhtar is this, that there is a suggestion, actually they are finding your voice a bit low, so they are referring that if you could manage to have a microphone for the next time. Right. So the other one is from that should a person go for a master's right after doing bachelor's, or work for a company or for a year to get a better understanding of the industry and then go for their master? जी बिल्कुल। देखिए आप मास्टर्स किस थॉट के साथ करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आईटी की फील्ड में स्पेसिफिकली मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए नहीं आप जा रहे, आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं। Only then go for masters if you are plan to do PhD. अगर आपका प्लान पीएचडी तक जाने का नहीं है, और फिर ये पूरी अलग रे ऑफ लाइफ है, इट्स अ लाइफ पैटर्न, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ पैटर्न। डिफरेंस आपको बताता हूँ, आपका बैचमेट जो कि 2 साल इंडस्ट्री में लगाता है, राइट? इस टाइम हमारे पास 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जो लोग हम हायर कर रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में, अगर मैं आपको उनकी सैलरी वेरिएशन बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड, राइट? हम 2 ईयर डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस के लोग जो डिफरेंट मार्केट में जो डिमांड है, ओवरऑल डिमांड में जिनमें बात करता हूँ, वो तकरीबन 70-80 के से लेके 200 के तक है इस टाइम। अच्छा, somebody having a value of 2 years of experience in market versus आपने 2 साल का मास्टर्स किया, then you rejoin, you join like in industry, right? तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे? From zero, right? As a fresh graduate again. तो वो 2 साल एक्सपीरियंस फिर आपके 2 साल का मास्टर आपको, as long as you are joining in any R&D area, which is very rare opportunity and very less quality opportunity in Pakistan, तो वो that may give you better. Still वो आपको एक हार्डकोर 2 ईयर डेवलपर से बेहतर पे नहीं कर रहा होगा। तो इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। आप R&D में जाना चाहते हैं, पीएचडी का प्लान करें तब मास्टर्स करें, और पीएचडी से पहले नो स्टॉप। सेकंड, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ एज अ डेवलपर, एज अ टेक गाय कंटिन्यू करना चाहते हैं, then don't do masters, be in market and then learn and add value in your skill. So right, other question is a bit longer, so I would prefer to read all of it. It is very difficult to get an even
an unpaid internship in any good software house in Pakistan. The local software houses does not help much with technical stuff. I want to go for SQA and DET, but even to get an unpaid internship, every software house needs 3 to 6 month experience in SQA in any other software house. Can you please tell me what exactly SDET do and any efficient way to go in software house without prior experience? देखिए अब ओके ये मिस इकरा Well, yeah, that's something I believe Harun Saab revert back to us. I'm not sure if she has come to our office and asked for the similar thing from us already, because I believe we are receiving a good number of opportunities from different software houses, and I would name a good number of software houses on our panel already. Those are willing to offer us internships, but I believe the student hasn't come to us already. But go ahead for your answer, and I will connect with her or with him later on, and we can help her or him similarly. So please go ahead. That's a good part. You already add something as a research responsible from your side. Thanks for that. मैं वैसे इसका एक बिल्कुल एक न्यूट्रल आंसर देना चाह रहा था. देखिए ये क्वेश्चन है, वैसे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग मुझे पिन करके कहते हैं लिंक्डइन पे जस्ट रैंडम गाइस, सर अगर आपको कोई इंटर्नशिप पता हो ना तो मुझे बताइएगा, राइट? एंड गेस व्हाट, इफ आई गेट लाइक 200 सेम रिक्वेस्ट एवरी डे, so where I stand in that context. मेरा इन्हीं मैन से क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपने पाइथन ऑटोमेशन या सेलेनियम ऑटोमेशन में 10% भी कुछ किया है अपने ऑन पे, तो आई कैन हेल्प यू टू गेट एन इंटर्नशिप. मुझे बाकियों का नहीं पता. आई कैन हेल्प यू राइट अवे टू गेट अ गुड इंटर्नशिप. देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा ये गुड की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है. मैंने लिखा था गुड सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, राइट? So I know people working with 10 people and they are really, really exceptionally good. And I know companies having 300 people and they... तो ये good की definition भी अपनी अपनी है. मेरा point ये है बड़ा simple and straight कि पहले आप जो 4 साल गुजारे हैं ना, आप उसमें कोशिश करें कुछ value add करने की. तो मतलब आप they are already been done, I guess, assuming it out, they are all like guys, right? तो कुछ ना कुछ value आपके resume में होना चाहिए जो kick starter हो companies के लिए कि उन्होंने आपको क्यों कंसीडर करना है, राइट? देखिए हम आपको सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं वर्ड्स से, एज्यूमिंग इट आउट कि आपको वर्ड्स आते हैं. हम आपको ये नहीं बताएंगे कि यार अल्फाबेट्स कैसे पढ़ना शुरू करना है. अगेन कीप दिस इन माइंड, ठीक है? उसकी रीजन बताता हूँ कि व्हेन यू गो इन द मार्केट, राइट, मेरे पास इंस्टीट्यूशन से सीवीज आ रहे हैं, ठीक है? मुझे एक तरफ बहुत कम एफर्ट करके और लोगों को अपॉर्चुनिटी में देता हूँ, दे परफॉर्म रियली वेल. दूसरी तरफ मुझे उससे 10 टाइम्स एफर्ट करना पड़ती है. तो देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाई नॉट आई वैल्यू माय टाइम, ठीक है? इसीलिए जो आपने मुझे कन्विंस करना है ना, द वैल्यू ऑन योर रेज्यूमे, मैंने इसलिए चीज में बात की बार बार वैल्यू पे, वो कुछ ना कुछ वैल्यू उधर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा SDET की जो बात की तो ये टाइटल टिपिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, ये टिपिकली यूज होता है जो आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस है, वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देने के लिए कि जो टेस्ट इंजीनियर है जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट माइंडसेट लाजमी है. वो अगर डेवलपमेंट माइंडसेट रखते हैं तो देन दे सेलेक्ट इन द QA, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बेशक एक लाइन ऑफ कोड ना लिखें, लेकिन डेवलपमेंट माइंडसेट इज डिफरेंट देन डूइंग द कोड, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा पॉइंट ये है कि कंपनीज आर देयर कीप ओके. सो अच्छा नेक्स्ट स्किल हमारा जो एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है और टिपिकली ऑफ ऑल ऑफ आवर ग्रुप्स, राइट? हमारे वी आर 34 ऑर्गेनाइजेशंस. तो हम अपने ग्रुप की जो डिमांड है वो कैसे मैनेज कर रहे होते हैं. वी ब्रिंग रॉ टैलेंट टू नेक्स्ट स्किल, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो लिस्ट होते हैं फॉर अ वेरी फोकस्ड लर्निंग एंड राइट. उसके थ्रू दे गेट ट्रेन्ड एंड वी डायरेक्टली पुट देम इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ये मॉडल बहुत ज्यादा मार्केट में सक्सेसफुल है. और मैं बताऊँ 10 years बैक मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि आने वाले वक्तों में डिफरेंट हाईटेक कंपनीज अपनी यूनिवर्सिटीज बनाएंगी पर्पस बिल्ड, कि वो एक टिपिकल टेक्नोलॉजिकल एरिया के अंदर वो लोगों को डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहां से रॉ टैलेंट पिक करेंगी, उन एरियाज में ट्रेन करेंगे, देन दे गेट वर्क लाइक देम डायरेक्टली बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम.
So next skill could also be good opportunity if you are like from some of people from your institution, they're gonna join them and then get like a good learning outcome. Sure. So Ikra Amin, I believe, wants to say something, and she was raising a hand as well. So I would request she can mute. I'm absolutely fine too. Yeah, Ikra, you can unmute your mic and you can speak. Right. So I'm not sure if she's still around. However, I would like to continue reading the question. There are many other jobs opportunities for data. Right. So whoever has raised their hand, please unmute their mic and ask the question. 221058. I'm not sure about their name. So actually, I am in 5th semester right now. लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मैं कहीं पे इंटर्नशिप कर लूँ, लेकिन मैं जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाती हूँ, बी इट लोकल और नेटसोल टाइप काइंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे वो सब यही कहते हैं कि आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए. और क्योंकि मैं 5th सेमेस्टर में, तो आई डोंट हैव मेनी प्रोजेक्ट्स विद मी, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट. मैं चाहती हूँ कि अनपेड हो. आई जस्ट वांट टू सिट देयर एंड सी के व्हाट पीपल डू, एंड आई जस्ट वांट टू डू स्टफ माय ओन सेल्फ. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देता. और बीइंग अ वुमेन इन पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं रोज जाके देखूं कि कहाँ कहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बी इट ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे काफी स्कैम भी होता है. तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि कौन सी सही प्लेस है मेरे लिए जहाँ से मुझे मिल सके. आई डिडंट नो बिफोर के एफसी जो है वो इंटर्नशिप में हेल्प करता है. I just came to know today. I would like to take this question actually. Ikra, first you have to come to our office, and we can certainly sit down and speak to you about this, because merely just going to some company and sitting and looking at people what they're doing is not internship. It has to be meaningful. It has to be something that one could able to pick you up, as Mr. Harun was already sharing with you that you need to add the value that what you have studied. So you need to come back to your own university. You need to come to us first, and you need to speak with us. The internship office exists in room number 10, cabin number, room number 30 in N block. So you're more than welcome to come over, or maybe you can log a online session with us, for which the details are very much available on the website. So that's about it. So Harun, would you like to say something about this question? जी सर, मुझे I just want to add 2 cents here. देखिए इक्रा, आप 5th के 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाह रहे हो. मैं आपको इससे बेहतर पर्सपेक्टिव बताता हूँ. वैल्यू एडिशन का एंड गोल क्या है आपका? एंड गोल आपका ये है कि आपने आफ्टर वंस यू कंप्लीट योर डिग्री, यू शुड बी डूइंग अ वेरी गुड स्टार्ट इन योर करियर, राइट? ये आपका एंड गोल है. उसी के लिए आप सपोर्टिव तौर पे एक इंटर्नशिप करना चाह रहे हो. मैं वो कहूँगा यार कि जो इंटर्नशिप वाला टाइम आपने जो इंटर्नशिप में जाके 2.5-3 महीने लगाने हैं ना, आप अपने FYP के लिए आप मल्टीपल कंपनीज को सिर्फ विजिट करो जाके, ऑन योर ऑन, सर्च ऑन लिंक्डइन, बी देयर, जस्ट सी कि वो किस टेक्नोलॉजी स्टैक में क्या कर रहे हैं. अपने सुपरवाइजर से एक दूसरे मशवरा लो. अब 5 सेमेस्टर में वो कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरफ आप डायरेक्शन सेट कर रहे हो. देखो इंटर्नशिप होती है 3 महीने की जनरली, राइट? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका होता है 6 months to 1 year, मोस्टली 1 year का होता है थ्रू आउट पाकिस्तान, ठीक है? अब 1 साल में, अब इसका सिंपल क्राइटेरिया मैं और किसी का मुझे पता नहीं है. आई वेलकम यू एंड any other individual of FCC who would like to visit us, right? आप एक ग्रुप प्लान कर ले, आप एज ए ग्रुप हमें विजिट करें. इट विल बी एन इंडस्ट्रियल टूर. हम आपको अपना पूरा ग्रुप एक्सपोज करेंगे कि हम किस टाइप का काम किस पर्टिकुलर एरिया में कैसे करते हैं, किन टेक स्टैक्स में काम होता है, आप किस तरह से एक्चुअली आई विल मेक यू सिट विद डिफरेंट टीम्स एंड देन यू कैन हैव एन आइडिया कि एक्चुअली एक प्रॉब्लम हमें आती है, उसको हम ब्रेकडाउन कैसे कर रहे होते हैं, टीम में डिवाइड कैसे होती है, ग्राफिक्स कब काम करता है, आर्ट कब काम करता, जो QA है उसके बाद कब बिल्ड जाती है, ब्ला ब्ला. ठीक है, ये मैं आपको हेल्प आउट करूंगा. अच्छा, FYP में क्या होगा? पूरा 1 साल देखें. इंटर्नशिप के बाद आप इंटरव्यू के जब आएंगे तो हम आपका आधे घंटे का पौने घंटे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है? एक FYP में क्या होगा? पूरा 1 साल आप हमारे साथ वैसे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे जैसे हमारा यहाँ पे बैठी कोई भी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है. स्काइप पर डिस्कशन चल रही है. कुछ केसेस हो सकता है हम आपको कहें कि आपने हफ्ता 2 हफ्ता डेली बेसिस के 3 घंटे ऑफिस में आके बैठना है,
नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है ये चीज, ठीक है। कुछ केसेस में आपके साथ स्काइप पे कॉल चल रही होंगी, आपके साथ वैसी इंटरेक्शन हो रही होगी जैसे हम अपनी बाकी टीम से कर रहे हैं। और अगर 1 साल पूरा ड्यूरिंग योर दैट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली हमारे से इंटरेक्ट कर रही हैं और लर्न कर रही हैं और चीजें इंप्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है, तो मुझे बताएं कि 1 साल के बाद जब हमें फाइनल ईयर कोई फर्स्ट ग्रेजुएट हायर करना है तो हमें आपका इंटरव्यू लेने की भी जरूरत है, क्योंकि हमने तो आपको पूरा साल इंटरव्यू लिया है, हमने आपका डिसिप्लिन इवेल्युएट किया, हमने आपकी इंटेग्रिटी इवेल्युएट की, हमने आपकी कमिटमेंट इवेल्युएट की, हमने आपकी स्किल इवेल्युएट की, हमने आपकी नेगोशिएशन पावर इवेल्युएट की। तो मेरे हिसाब से रादर इंटर्नशिप के पीछे भागने के आई वुड सजेस्ट primarily FYP और मैम ये आप बाकी जो इनके बाद के बैचेज है ना, अभी मुझे नहीं पता लेकिन सब 7th के या 8th के या इनमें कुछ जूनियर्स भी हैं, जैसे ये 5th की हैं जैसे का, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि गो फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और उसको फोकस अप करो कि इंडस्ट्री में किसके साथ करना है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, फिर आपने इन टच कैसे होना है उसके लिए देखें, मैं सबसे पहले कहूँगा कि जितना इंडिपेंडेंट हो के आप लोग सोचेंगे ना, आप उतना अच्छा आपको करियर प्रोग्रेशन मिलेगी और उतना अच्छा आप वर्किंग कर सकते हैं। नो डाउट आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसने हमें भी आज ये अरेंज किया, एंड आई थैंक टू देम दैट दे थिंक ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर सेशन टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग एक तो हमारे वेस्टफील्ड या उसके केस में यू कैन जस्ट कम अप थ्रू ऑल ऑफ देम एज एन ग्रुप, आप लोग प्लान करें, डू विजिट अस इंडिपेंडेंटली। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपके सीनियर्स किन 5 या 10 ऐसी कंपनी में बैठे हुए हैं जहाँ पे कल को आपकी भी चांसेस हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी के। क्या आप उनके साथ लिंक्डइन इज अ सोशल फोरम फॉर प्रोफेशनल्स, क्या आप लिंक्डइन पे उनके साथ इन कॉन्टेक्ट हो? अगर हो तो उनकी कंपनीज क्या करती है, कितनी कंपनीज का आपको पता है, ठीक है। आपको घर से उठ के अगर इंटरनेट और लैपटॉप आपके पास है और आप सीरियस है अबाउट योर करियर, तो आपको उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। You can do everything being seated there if you just add seriousness in your effort, right? आप अपने एलुमनी का डेटा आपके पास होगा, आई एम डैम श्योर। इन लिंक होंगे, नहीं तो इमीडिएट बैच का तो पता ही है ना, लिंक्डइन पे जाएं, आप सर्च देयर कंपनीज, टॉक टू दोस कंपनीज। अगर वो जवाब नहीं देती है तो एचआर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दे आर प्रीटी मच सोशल एंड ओपन इन द मार्केट नाउ, राइट? तो at least you can talk to your seniors and just tell them I want to know about this thing, help me out and all that. मेरा ख्याल है डेली बेसिस पे 10 से ज्यादा लोगों को, ऑन एवरेज 10 से ज्यादा लोगों से, नए लोगों से मैं डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, और वो मैंने इनिशिएट करता हूँ, उन्होंने मुझे मैसेजेस नोटिफिकेशन भेजे, ठीक है। ये एक नॉलेज मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट वे है विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, एंड द ओनली थिंग इन्वेस्टिंग इज योर टाइम एंड योर फोकस। तो मेरा ख्याल है यू कैन इवन सिक्योर without your own department as well. Department effort कर रहा है, आप उसे ट्रैक करें, that's the primary thing. Second thing is don't just rely, नहीं, as a skill don't just learn to rely on others only, ठीक है। अपने एरिया में भी आपको एफर्ट करनी है ना। 4 साल के बाद तो डिपार्टमेंट विल बी थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, राइट? फिर क्या करोगे आप लोग? तो थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट एज वेल, राइट? तो मेरा ये पॉइंट है कि आप इंटर्नशिप है, बहुत इंटर्नशिप है, अच्छी कंपनीज भी बहुत है। अभी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अच्छी कंपनीज को ये नहीं पता कि अच्छे लोग किधर हैं, अच्छे लोगों को ये नहीं पता कि अच्छी कंपनीज किधर हैं। तो उस केस में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस, आप जैसे आप लोग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के जो करियर सबसिडी वाले हैं, वो बड़ा हद तक हेल्प आउट करते हैं टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। इंडस्ट्री में जैसे मैं अभी आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मेरे आप इधर से पहले आई वाज लाइक अभी 2 अदर सेशंस एज वेल, तो वी आर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन। इंशाल्लाह बिगर पिक्चर में वो फिक्स कर। Right. So, Mr. Haroon, we have limited time now. I mean, we have passed, I mean, ऊपर ही चला गया time, but I just wanted to quickly take the questions. 221055 has raised the hand. I'm not sure about their name. Please go ahead and ask the question. Yes, ma'am. Sean Paul here. Sir, I'm asking about that. You already explained that we should not go for a master's unless we having plan for PhD. I'm having plan for my master's or PhD for higher education from Germany. Is it good approach to doing my master's or PhD from Germany and then go for a professional? Is it more payable than I should go for in professional life after my bachelor's? मेरे जो आंसर था, देखिए उसका क्रक्स ये था कि it will not be more payable if you are only thinking from the financial standpoint in pure hardcore tech domain, right?
अगर आप R&D की डोमेन में, आप जर्मनी में ही, आप मर्सिडीज बेंज में या फोर्ड में या उनकी और फार्मा की किसी कंपनी में चले जाते हो R&D में, दैट मे पे यू वेल ओवर देयर. पाकिस्तान वापस आना है, आके उसी इंडस्ट्री में जाना है जहाँ आपके 2 year competitive resource बैठा हुआ है, तो you will not get better than that guy at least. All right, sir. And sir, I'm really appreciated that you welcome us for collaborating with your software house, and I'm surely contact with through department to you to collaborating from FFP with you. Thank you very much. अच्छा, Okay, मैं thank let you. me quickly give answer to everybody of the questions, अब हम इसको wrap up कर देते हैं. डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जॉब्स का किसी ने पूछा हुआ है, मिस्टर उमर नवाज. तो ब्रदर, क्विक थिंग इज, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और 30 अच्छे लोग डेटा इंजीनियर जो ML के इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है. सो बहुत स्कोप है, गो फॉर दैट. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. डिग्री No, you don't have to stay and like up and learning something new. Apply, right? आपकी जो basic skills है ना, OOP, data structures, algo, automata, OS, this is enough to convince that you are a good engineer, right? बाकी frameworks वो आपको industry सिखा देगा. Scope of Rust programming language in Pakistan. What is the industry where Rust? यार अगले 10 to 15 years, Rust is the game. After Core, C and Linux, now Rust is something which is the next level of demand in the market. और आप अगर Rust में जाना चाहते हो and Rust में अगर आप काम कर रहे हो, तो I would say keep doing. Or once you are graduated, and if you think you're not getting a good opportunity somewhere, remember me, send me your resume through your department or directly mentioning Rust thing. I will make sure give you an opportunity. Which is not the best. Okay, Sohaib Kamran Saib, sir, in your experience, which CS discipline offers the best work-life balance and pays well in Pakistan? Not only in CS, in any other discipline, no discipline will be giving you the best work-life balance. It's you who have to manage that work-life balance, regardless of the field, right? एक काम आप 2 घंटे में, आप 12 घंटे में कर रहे हैं, and there's another guy जो वही outcome 2 घंटे में दे रहा है, तो work-life balance किसके हाथ में है? So can you tell us about cloud computing, which is the scope is of in Pakistan? Yes, cloud computing is quite a lot in getting in the market. बहुत थोड़ी कंपनीज है, लेकिन बहुत क्वालिटी का काम है जो पाकिस्तान में हो रहा है. You have to dig it out and see और keep working on that. अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लोर करना है तो नॉर्थ बे सॉल्यूशंस इज वन ऑफ द कंपनी जो टिपिकली MS और AWS बेस्ड है, तो यू कैन स्टडी देम. For a full stack developer, what's the average starting salary in the market? And a lot of us think that there is nothing much new going on in the government sector. We should not even consider. Yeah, salary से related मैं आपको food of thought देना चाहूँगा. अक्सर बच्चे क्या पूछते हैं, मुझे starting salary 50,000 तो मिलनी चाहिए. अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं आपको 80K देना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें. Why 50K? और एक इसका एक और पर्सपेक्टिव है, सर मैं 60K एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैलरी, ठीक है. And I generally ask a question that why not 70K or 50K? And then they are blank. They don't have any answer like when I ask counter question. So be very sure कि आप जो भी पैसे कह रहे हैं, आपको उसके पीछे लॉजिक पता होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू स्टैंड पॉइंट से उस स्किल की डिमांड वर्सेस जो एक्चुअली मैप्ड वैल्यू है वो क्या स्टैंड करे. बहुत वेरिएशन है, आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा. टिपिकली बेस्ट वे इज टिप इज टॉक टू योर टिपिकल सीनियर्स जो उस टिपिकल डिवीजन में काम करें. यार वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट नो. अहमद यासिर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं जाना चाहिए, सो क्राउडेड. ये वही केस है कि आपको अब BBA या MBA नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने कर लिया है. तो पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से एक वेरी यूनिक डायनेमिक्स, हर फील्ड का स्कोप है और किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं है. इट्स यू हैव टू डिफाइन द स्कोप, राइट. अगर आज भी लोग हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और स्कूल से होते हुए जाते हैं, ठीक है. पर आज भी लोग हैं जो मेरे पास आई नो सम पीपल टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन के जो अभी तक बेसिक नौकरी भी सिक्योर नहीं कर सके. तो ये दोनों स्ट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं. So it's not about the field, it's about you, how much value you can gain.
Flutter, yeah, Yeah. Flutter and React Native are the next cross thing. ये मिस्टर अब्दुल्ला कुरैशी है कोई जिन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया हुआ है. You don't even have to be a graduate to be a good programmer or developer. तो मेरा ख्याल ये comment of the today's session है. तो ये इसको complete आगे कर लें. Then you even don't have to be an FCCU to be a good programmer or developer. Right. There is another one. What is the scope for cyber security in the upcoming years and in Pakistan? Let me, Hamza Zahid hai. Sir, are there opportunities for those who are interested in hardware or embedded system in Pakistan? जी बहुत scope है. I have like 10 different companies on my fingertip जिनके नाम मैं अभी आपको बता सकता हूँ. कुछ के बता देता हूँ आपको. Then you can further find out. Embedded में eBricks एक company है. They are working. Mentor is working. uBlocks is working. PowerSoft Front-end is working. Microtech Lab, they are also working in that. So there are so many other as well. So ये कुछ companies मैंने नाम लिए हैं. आप इनको explore करें. आपको your LinkedIn for sure, man. Let me share in the chat box. या मैं मैम को भेज देता हूँ अपना LinkedIn and then you can just search me on Google. Go on Google, Haroon Akhtar and OZI Technology. You have my LinkedIn. What is this? Cyber security. Okay, man. Cyber security में I built cyber security industry in Pakistan. I worked for like before this company. I worked for 6.5 years in eBricks Private Limited. eBricks is the major cyber security game in Pakistan. और cyber security के scope का अंदाजा यहाँ से लगा लो. 2 years back, Red Hat conference दुनिया की सबसे बड़ी conference होती है जो US में होती है. और Red Hat की outcome ये थी कि अगर अमेरिका में उन्हें 100 लोग चाहिए तो 52 अवेलेबल है, 48 सीरियस ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है, राइट. तो इतना स्कोप है और यही सिचुएशन इस पाकिस्तान में है. मैंने अभी एक टाइटल बोला था DevSecOps, डेव सिक्योरिटी ऑपरेशंस, राइट. अब सिर्फ कोडिंग नहीं है. अगला जो दौर है ना वो सिक्योर कोडिंग का है, वो सिक्योर ऑपरेशंस का है, वो सिक्योर एनालिसिस का है, राइट. सिक्योरिटी क्यूएस, ये भी आप टाइटल अभी आप आगे सुनेंगे. तो साइबर सिक्योरिटी में अगर जाना चाहते हैं तो यस, doors are open and there is like more than 30 years career right there. Companies, मैं companies जो बताता हूँ आपको, you can explore those as well. Transulus in Islamabad, Trillium is over there, Tutor is in Karachi, Lahore में eBricks is working, Slashdust is working, to an extent Mentor do work on security side, वो embedded security में काम करते हैं. uBlocks is also working to some extent on security side. तो ये कुछ एरिया, कुछ कंपनीज हैं जो फिंगरटिप में हैं और मैं अभी कुछ या डेटा साइंस में जो आजकल मोस्ट प्रोमिनेंट है, Adobe.ai को आप एक्सप्लोर करो, Datix.ai को आप एक्सप्लोर करो, Gapper.ai कुछ हद तक इस पे है, काम कर रहे. और ये जो प्रोमिनेंट है वो तो ये 2-3 हैं जिनको मैंने नाम लिया, वो एक्टिव टेकिंग. बाकी एमएल में कुछ टीम्स हैं, Arbisoft I guess have a good TRG have a good team like this. So that's how you can get in the race. अच्छा, एक अच्छी अप्रोच आपको बताऊं. If you ever gonna connect with Nextskill, right? तो ये जितने मैंने आपको नाम लिया ना, we are directly or indirectly, we are coordinating and connecting with all of them, right? So we are mashallah a central hub. That's one of the reasons you can get there. I am adding more value in part of this. Abdul Rauf, so game development, yes. अच्छा, interestingly मेरा क्वेश्चन फैकल्टी मेंबर से है जो भी अभी मिस सारा है, कक्षा की करियर काउंसलिंग की करियर डिपार्टमेंट में देखी है कि जितने नाम इन बच्चों ने लिया है, excellent part is that they ask questions in all those areas. That's the excellent part. The second part is क्या FYPs in particular domains में, चाहे ये ग्रुप ही है, बच्चे अभी पिक कर रहे हैं, मतलब I don't know about the things and I am very much interested to explore कि अगर ये लोग काम करें. Sorry, come again. I have just missed your question. Actually, ये जो गेम डेवलपमेंट है, अच्छा मैं पहले गेम डेवलपमेंट की कंपनीज बता दूं ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ताकि इनको अंदाजा हो जाए. यार गेम डेवलपमेंट में you can start with, first of all we are the leaders, OZI Technology, and you can search as OZI Group, और इस ग्रुप के अंदर OZI Technology, GameStorm Studios, Brilliant Studios, Brilliant Games, Consoli Ads is on ad network, but still we are in the gaming domain.
Gaminators is another one of our core team. तो ये कुछ टीम्स हैं जो प्योरली गेमिंग में काम करें. इसके अलावा जो मार्केट में है उसमें जेनर टीम है, उसमें कैरामल टेक है, उसमें फ्रैग गेम्स है, उसमें म्यूजिक स्टूडियोज है, then there is a company, Starbound, we play, there are so many other names, right? तो ये सारे हैं जो गेम डेवलपमेंट में है और बहुत अच्छा स्कोप है, typically यूनिटी डेवलपमेंट में. Yeah, obviously Mindstorm is what is stuck in my mind, and like I was gonna say, thank you very much, Amna, for that. So that's the game, right? और अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था सारा कि ये जिन डोमेन में साइबर सिक्योरिटी है, गेम डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, क्या इन डोमेन में अभी ये जो जिस बैच से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इनमें बच्चों ने FYPs पे किए हुए? सर्टनली किए होंगे. बेसिकली ये मिक्स स्लॉट है. हमारी जो हेड है, शी हैज लेफ्ट द मीटिंग बिकॉज शी हैज टू वन. Sarah, I'm here. I chose to stay. Yeah, you chose to stay, right? So, Yeah. Dr. Asia, I would route that question towards you. I request you if you could answer. I believe this is a mixed slot, but you may answer Mr. Haroon's question. Yeah. First of all, I must thank Mr. Haroon a lot. It has been a very interesting session, and I had to postpone my other meeting to keep attending to this one. We are very much honored, honestly speaking, because when she said that she left because of something important, so I was like, okay, because I take more time, so that's fine. But thank you very much to stay and like. Yeah, I think the students are also equally motivated by your talk. It has been very interesting, and we'll definitely be looking forward to visiting you and maintaining our contacts with you. Regarding the projects, yes, I will talk to you about the projects that were just completed in the spring semester. So the students have been working on games. So this is there, and then they have been developing embedded systems projects. They're working on sensors and geographical positioning systems, and then they have been working on virtual reality, data science, AI. So these things are very much there. Machine learning is one of our strongest points. In terms of faculty, we are very strong, and also the students. They have been doing some very, very interesting projects, and they even won a competition that was, this is not about the recent batch, but a previous batch also won a competition that was held at NUST, and there they won among the, like all the universities in Pakistan, they got the Best in Punjab prize over there. So the projects they're doing, and they have their posters also. We normally conduct a poster session, poster exhibition, and we would like to invite you for the next time the poster session is held. But for now, we would be very glad to share the posters with you if we have your contact, so that you can have a look at them and see what kind of work the students are doing. Perfect, more than perfect, and thanks a lot, ma'am, for the briefing. मैं एक पॉइंट या बस आखिरी कमेंट मैं अपने से ऐड करना चाहूँगा कि you guys are one of the rare universities. I move around like quite frequently throughout Pakistan and all the universities. So you are one of the very rare university जिसमें ये अभी जो आपने combination मुझे बताए हैं, इन सब में at least एक group है. Honestly speaking, I talked to 22 universities as soon as I joined this organization like 7-8 months back. तो मुझे यूनिटी के लोग चाहिए थे, एंड आई वाज डिस्कसिंग विद देम कि मुझे यूनिटी डेवलपर्स चाहिए, तो जितने भी आप लोग हैं, वी आर ओके टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड. कैन यू बिलीव 22 यूनिवर्सिटीज में से आई गॉट रिस्पांस फ्रॉम 5 यूनिवर्सिटीज हु एटलीस्ट वांट टू टॉक ऑन दैट टॉपिक कि यार यूनिटी टाइप की कुछ चीज होती है, एंड देन आई गॉट ओनली 3 FYPs जो यूनिटी में काम करते हैं. और मेरा क्या टारगेट था कि हमने अगले 2 सालों में वी विल हायर 1000 यूनिटी पीपल. Can you believe the difference? I mean, can you expect the difference gap? 22 universities में से मुझे ये pool मिल रहा है. तो how can I confidently think of growing from 1,000 people to 5,000 people in next 5 years? तो ये एक dilemma है. Inshallah, as soon as I get introduced, हम लोग इस पे मिलके भी काम करेंगे. From industry standpoint, you will always, in my personal capacity and as a part of this team, you will always keep us a step ahead, doing anything for the betterment of students. Thank you so much. So appreciated.
Jimmy sir, I'm done as long as any other question. Otherwise, I'm done. Right. So we must thank you because we are going to have another meeting in just a couple of minutes. So Sure. thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much that you have explained everything so well. So take very good care of yourself, and we will definitely be contacting you again for any other session. This is And for sure, for sure. looking forward to have this kind of collaboration further on. Take care, Ji. Thank you very much. Thanks for having us right. for this session. Inshallah, Right. see you soon. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you so much. Take care. Bye-bye. The